Hi guys, welcome to OAS Hub. केमती अछंती? So आज environment section आज देखिबा. Environment section देखिबा. We'll start once people come, then we'll start. Okay. गोटे 2 मिनिट वेट करंतु देन आमे स्टार्ट करिया जेतरे समस्ते देखि परिबे. और आवाज आसी जो माने ऑलरेडी आसी सारचंती तांकर प्रेजेंट पकांतु. ओके. जो माने आसी सारचंती तांकर प्रेजेंट पकांतु. Hi guys, जल्दी आसी गला विल स्टार्ट देन. ओके, हमें स्टार्ट कर दवा. अब बेसी लेट करवानी. आज एनवायरनमेंट सेक्शन देखिबा. ओके. ये क्या आसिलो जल्दी जल्दी आसी जाओ. आउ डिले करवानी. तो विल स्टार्ट नाउ. तो एनवायरनमेंट सेक्शन आज देखिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओपीएससी रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज हमर जोंडे की मोस्ट कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपनकर एई रिलेटेड कांसेप्ट रो एग्जाम रे आसीबो जरूर. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. Good evening, Aisa, Susri. Okay, now we'll start. On the ozone layer, CFC, the ozone layer, the CFC continuing their effect as a CFC ozone layer. CFC तार कौन effect create करते the reaction used of the chlorine atom formed by them leading to the degradation of ozone. Their efficient absorption by water vapors of the atmosphere. Reaction the chlorine atom formed by them serve as a catalyst leading to the degradation of ozone. They are constantly produced in increasing quantities. तो ओजोन लेयर है CFC तार इफेक्ट कौन देखा है. वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस. ओजोन लेयर CFC रो कौन बेसिकली यूज CFC रो क्लोरो फ्लोरोकार्बन. तो क्लोरीन एटम रो ये अछि. सो करेक्ट आंसर इज क्लोरीन एटम फॉर्म बाय देम सर्व एज ए कैटलिस्ट. सेति पई ओजोन को डिग्रेडेशन कर दिए. ती हमें देखिबा stratosphere basically UV rays act on them releasing Cl atoms.
सीएफसी रे ओजोन बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर रे यूवी रेज आसले ताको ब्रेक कर दिए एटम एंड क्लोरीन बेसिकली ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को बेसिकली डिग्रेड करे with these atoms acting merely as a catalyst. So chlorine atom are not consumed in a reaction. Hence, whatever CFC are added to the starter, they have paramount and continuing effect on the identifying the incorrect statement. Identify the incorrect statement. देखो बल से पढ़ो. Yes, see the correct answer. Identify the incorrect statement. The eutrophication is the natural process. देखो क्वेश्चंस रे आंसर जते इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विषय रे कांसेप्ट जानिबा भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट. So prepare accordingly. Okay, not just see questions as a basically isolation देखंतनी केवल गोटिए क्वेश्चन you are preparing. Eutrophication is a natural process seen in freshwater bodies. Incorrect कथा होची. Greenhouse effect occurs naturally in the upper part of the atmosphere. Ozone causes harm to animal, and in tropical area most of the forest have been incorrect statement. Correct statement. जल्दी. Yes. 2 number eutrophication is natural process. Freshwater body eutrophication natural process. जल्दी कुह यार रीजन कुह. So basically eutrophication fresh water bodies रे natural माने bio accumulation है कि basically accumulation through रे हुए. So this is correct statement. Greenhouse effect naturally upper part of the atmosphere ozone. This is a good ozone. Now stratospheric ozone basically harm to animal. Now upper part of atmosphere basically stratosphere जदि देखिबा and tropical area most yeah that is yes एठी agriculture बेसी होची. So see the eutrophic general term describe the accumulates in the body of water. ସେଇଥିରେ growth हुए micro organism जोटा कि ऑक्सीजन रो अमाउंट को डिप्लीट करे कम करे. ग्रीनहाउस इफेक्ट जानिच जोटा कि अकर हुए एटमॉस्फेयर. डायरेक्ट कज ऑफ ट्रॉपिकल लॉस जोटा कि बेसिकली कमर्शियल एग्रीकल्चर हला को डिफॉरेस्टेशन हो बहुत सारा कंट्री ट्रॉपिकल एरिया रे फॉरेस्ट जोटा कि कमी गलानी. लास्ट लास्ट स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जोटा कि अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर गुड ओजोन ये प्रोटेक्ट करे अर्थ को ना नहीं. तो ये हार्मफुल एनिमल केमती हम बेड ओजोन जोटा कि आमर एटमॉस्फेयर थाए लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर जोटा कि बेड ओजोन थाए कि पॉल्यूटेड हार्मफुल फॉर एनिमल एंड प्लांट लाइफ. So this is basically correct answer. The correct name the country announced the change to change their capital due to sea level rise. Sea level jar rise जो ये current affairs related question तार capital change करिया पई announce करता. yes fertilizer कथा तुम जोटा कहूँ fertilizer आसी देख ये क्वेश्चन टिके कंट्रोवर्शियल अच्छी. इनिशियली मते भी लागिथिला कि एटा हबा कथा बट रियल रीजन हैला कोन ना दिस इज नॉट पॉसिबल ना. यूट्रोफिकेशन नेचुरल एथि कहा प्रेजेंट वर्ल्ड रे तुम्हें जदि फर्टिलाइजर यूज करूचे ऑटोमेटिकली नेचुरली सी जाकी एक्युमुलेट होची एंड एक्युमुलेट हेकी गोटे वाटर बॉडी ऊपर बेसिकली न्यूट्रिएंट जुगु माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाउछ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को नउची तो ऑक्सीजन अमाउंट कमी जाउची वाटर रे. तो बेसिकली जदि सेही संदर्भ रे देखिबा नेचुरल जेमिति आमर घर रे यूज करूछु किछि मटेरियल्स हो या घर रे खाइबा पत्र जाउछि ड्रेन होछि सेटा देखि जदि पानी रे मिसुछि तो देखिले तो नेचुरल बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी मैन मेड बट देखिबो एई पार्ट देखो अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर जने ओजोन कॉज हार्म टू एनिमल इज इट पॉसिबल है ना नहीं. सो सेइथि पई मु एटा को बेसिकली आंसर टा एटा को करली. अदरवाइज जदि देखिबो
ये ऑप्शन भी भूल हवा कथा दिस इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस जोटा कि आमर जिते जाऊँगी प्लांट को खास करके ये यूट्रिफिकेशन केतेबेले हुए जिते फर्टिलाइजर रन ऑफ होगी जे पानी मिसे से समय हुए दैट्स राइट यस इंडोनेशिया वाज करेक्ट सब बुझीगल तो से अनुसार कौन कर क्वेश्चन सेमती देती कंट्रोवर्शियल टी अच्छी इंडोनेशिया एशिया द फर्स्ट टाइम द क्लाइमेट क्राइसिस हैज प्लेड ए रोल इन द प्रोसेस रिसेंट ईयर जोटा कि राइजिंग सी लेवल जो जकार्ता को से माने बनैले द वर्ल्ड फर्स्टेस्ट किंग मेगा सिटी पार्क द इंडोनेशिया गवर्नमेंट टू डिस्ट्रिक्ट द कैपिटल जकार्ता जोटा कि मुव करने को ट्राए कला बहुत जल्दी सी माने लगे इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन व्हिच इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन 1973 1975 1990 1999 बहुत जल्दी को 1975 a direct question and the project crocodile the crocodile conservation project launched in 1973 different state Harial saltwater crocodile conservation first implemented in Odisha yearly 75 तापरे the Mugur conservation program was initiated according to the latest report which city was world's most polluted city 2021 पुराना क्वेश्चंस 21 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स रिलेटेड एनवायरनमेंट तो एनवायरनमेंट सब बेले करंट अफेयर्स रिलेटेड मोस्टली थाए बहुत सारे माने सब क्वेश्चन थाए एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स ए दुटा करंट अफेयर बेस्ड थाए सो करंट अफेयर्स बेस्ड तुम्हें प्रैक्टिस कर दबो करंट अफेयर्स बेस्ड ट्राई टू प्रैक्टिस वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी 2000 रे मांडी थिला नॉट दिल्ली 2021 रे दिल्ली नो करंट अफेयर्स उपरे दिल्ली सेकंड रे थिला मांडी होबो राजस्थान सर डे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम एबे किछि वैलिड नुसे क्वेश्चन सर डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम हुई मैंग्रोव इकोसिस्टम तो ये क्वेश्चंस रो आंसर कोनटा नाही ये क्वेश्चंस रो आंसर कोनटा नाही ओपीएससी आंसर देनी स्टार मार्क कर दीजिए डे ऑफ कंजर्वेशन फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम 26 जुलाई वाज नॉट द ऑप्शन हियर तो समस्त को बेसिकली से क्वेश्चन का एलिमिनेट कराई awareness of mangrove importance of mangrove ecosystem unique special and vulnerable ecosystem promote solution for their management and conservation consider the following statement coal ash contains arsenic lead and mercury coal fired power plant releases sulfur dioxide and oxides of nitrogen into the environment high ash content is observed in Indian coal so which of the following are the correct answer which of the following are the correct answer समस्ते आंसर दवा ट्राई कर जल्दी 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 ट्राई कर जवाब दवा coal has contain arsenic lead mercury this is right coal fire power plant releases sulfur dioxide and oxides of nitrogen into the environment that is also correct high ash content observed in Indian coal yes that is why आमे coal आनुछु so all of the above is the correction coal सेठी पे आमे import करूछु काइना मोस्टली coal हला तुमरो हीट लिग्नाइट बेसी मैक्सिमम मिले आंथ्रासाइड आमर ये बहुत ही कम मिले कश्मीर वगैरह किसी मिले तो आस कंटेन्स लिग्नाइट भी आमर ओडिशा तो मिले जाकि लिग्नाइट नेवेली लिग्नाइट प्लांट अच्छी आमर साउथ रे like mercury cadmium and arsenic without proper management these contaminants can be pollute waterways groundwater drinking water and air power plant also produce a large amount of nitrogen dioxide and sulfur dioxide pollutant that causes acid rain like nitrogen it are very important questions nitrogen dioxide and
सल्फर डाइऑक्साइड जो एसिड रेन हुए ना, when the fossil fuel especially coal produce. Okay, which of the following are the key feature of National Ganga River Basin Authority NGRBA? River basin is the unit of planning and management. River basin is the unit of planning and management. It spearhead the river conservation effort at the national level. One of the chief minister of the state through which Ganga flows become the chairman the RBA. So Kaunta basically correct answer. So river basin is the unit of planning and management. RBA spearhead the river conservation effort of national level. Yes, these are correct. One of the chief minister nuhanti. This is not the right. A is the correct answer. So central government basically set up karthila. Ore is central and state government under the environment protection बनाइथिला pollution को river Ganga रो हवा पाई. The authority chaired by prime minister, not chief the particular state. Ganga flow होची सेटा गोटे भूल जाइथिला. And union minister and the chief minister through which Ganga flows basically member थांती, not चेयर्ड करंदी, चेयरमैन कोनती. ठीक कोन क्वेश्चन देइथिला चेयरमैन. ओके इटू चेंज करती इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इज potential. Most potent in terms of efficiency, the most potent greenhouse gas is CFC नहीं potent chlorofluorocarbon. सेठी ପାଇଁ ତ याकू एलिमिनेट କରିବାକୁ चाहूची. Chlorofluorocarbon is the most potent greenhouse gas in terms of efficiency. Life on the earth is possible only because of greenhouse effect. The greenhouse effect is the natural process that helps in earth. So according to Selford's law of tolerance, the organism wide environmental factor tolerance. ये क्वेश्चंस तुम्हें चाहिए करि पारो नले स्किप करि पारो केने बळे क्वेश्चंस एग्जाम रे टी जदि आसला आसला छाडी दबो कि wide distribution with high population size. Selford law of tolerance. It is developed by American geologist Sir Ernest Selford in 1991. According to Selford law of tolerance, the organism wide environmental factor tolerance shows according to the law, species that are able to withstand high stress usually have greater area of distribution and large population. Inflammatory bowel disease IBD is a group of disorder that cause chronic inflammation in which of the following organs? Bowel bowel movement intestine, right Krishna. Khushi. Okay. Beyond visual line of sight. Beyond visual line of sight is an experiment associated with which of the following device? Here, so inflammatory bowel disease IBD is a group of disorder that cause chronic inflammation, pain, waste. Include Crohn's disease and ulcerative colitis. Both types affect in digestive. Then beyond visual line of sight is an experiment associated with which of the following device? Naval ship, unmanned area vehicle, submarines and anti-tank missile. Beyond visual sight news रे थिला सेति पई क्वेश्चन आसला UAV unmanned aerial vehicle beyond visual line of sight associated with UAVs, that is the distance where drones and UAVs operate outside the normal visibility, and it is the first
phase of testing. The drones are operated in the visual line of sight. In ethylene, which of the following shape is acquired by the molecule? Ethylene रे जल्दी जल्दी जवाब दियो. समस्त गोटे लाइक फाइक करूछ ना नहीं जवाब कहीं दउछनी बहुत कम पिला जवाब दउछनी तो को प्लानर ट्रायंगुलर फाइलिन एडा क्वेश्चन रा एपिसोडिक क्वेश्चन ये बड़ा क्वेश्चन आसिले तुम कहबनी करबनी अल्कालाइन्स अल्कालिन से कोन प्लस 2 पडियो ना कोन द हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स तो इथाइलिन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर थाई को प्लानर TV. ये क्वेश्चन आस्ते ऑब्वियस नेम द न्यू टूल दैट इज aimed at matching potential volunteers to the new clinical trials. Name the new tools that aimed at matching potential volunteers new clinical trials. Country without COVID, world with less COVID, coal without COVID, world without COVID. से समय न्यूज रे थिला सेहि में पके देथिला वर्ल्ड विदाउट कोविड clinical trials रे but world first floating nuclear plant was developed by which of the following countries? Russia, India, China, USA. ये important floating park solar. अरे गल कुआडे सबू कहीं जवाब दउन जल्दी जल्दी करूची कि जोटा इंपोर्टेंट सेटा देखिबा बेसी फैक्चुअल क्वेश्चंस गुडार किछि नाही महत्व ना कोन कहउछ डी लिजान लिजालिन लिजालिन डी को जो ना ना बेटा यूएसए नुह रशिया के रशिया पानी बहुत है रशिया में रशिया हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन academic Lomonosov. Okay, academic Lomonosov. Okay, next, which of the following cause is responsible for production of radiocarbon in atmosphere? Radiocarbon production एक कौनटा help करे atmosphere lightning discharge in atmosphere, action of ultraviolet light from sun, atmospheric oxygen, action of solar radiation, particularly cosmic ray on carbon dioxide atmosphere, collision between first neutron and nitrogen nuclei present in the atmosphere. This is very environment perspective रो जानी पड़थुबो एटा बेसिकली रेडियो एक्टिव या रेडियो कार्बन एटमॉस्फेयर साडे कतळे न्यूक्लियर पावर प्लांट रे कोन हुए कोलिजन करा जाए हां कोलिजन थ्रू रे फ्यूजन और फिजन चले फ्यूजन कथा टिको आउछ तो डी the correct answer. High energy cosmic rays from the sun constantly bombarded with the upper atmosphere. High energy particle undergo of nuclear reaction. Neutron react with nitrogen atom in the atmosphere and result in the formation of radiocarbon. D is the correct answer. See, halophytes are the types of plant are preferred to grow on dry soil. Halophytes, this is very important also. Sandy, saline, waterlogged soil. कोनटा हबो saline soil. Halophytes पुनिया समुद्र रे हुए ए भलिया halophytes. Halophytes are defined as plant that naturally habitat saline environment, benefit from having substantial amount of salt in the growth. Yeah, halophyte grow in a wide variety of saline habitats from salt marshes and mud floods to inland desert, salt flood, and thick vegetation of mangroves is present in vegetations of mangroves is present in Western Ghat, Sundarban, Gir forest, Himalaya. अरे जिते जन देखिए सब गोटे लाइक शेयर करो सांगसाथी सहित शेयर करो लाइक करो थिक वेजिटेशन ऑफ मैंग्रोव्स इज प्रेजेंट इन वेस्टर्न घाट थिक मैंग्रोव्स रो एटा इजीली कहि परियो एटा जे न कहि परियो कोन कहि परियो
सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा, ठीक वेजिटेशन मैंग्रोव। ये जो देखो Bengal, South Asia comprise 6.8% world's mangrove cover South Asia. India contributed 45% total mangrove cover in South Asia. West Bengal has the highest percentage of area under the mangrove cover, by followed by Gujarat and Andaman Nicobar. आमे भाबियोनी कि ओडिशा सेकेंड, आगे वेस्ट बेंगल, तापरे गुजरात. सुंदरबन in West Bengal is the largest mangrove forest in the world, listed UNESCO World Heritage Site. Broad lived deciduous forest, leaf hover, are typical of monsoon region, Mediterranean region, broad leaf. Monsoon, Mediterranean region, temperate region, alpine region. four region broad leaves हुए. बड़ा पत्र. Deciduous କହିଛି, deciduous. ଏଇଟା ବି ବୁଝୁଥିବ. ଆରେ କ'ଣ କହୁଛ? broad leaved ପତ୍ର, deciduous forest. Monsoon region. Tropical deciduous forest also referred as monsoon forest. କୁହା ଯାଏନି କି? Tropical deciduous. Home to trees with broad leaves which shed one season. Range of rainfall to 70 to 200 centimeters, almost 65 to 60 forest cover. Yeah, that tropical forest in India. There are mostly tropical deciduous forest achi. India, these forest type found in the states of Madhya Pradesh, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand, Maharashtra kichi part. Okay. Leaves through broad thai, the patra jhade, so dry season ase. Which of the following is mutually beneficial to organism, association, parasitic, antagonism, naturalism? Mutually symbiotic relation, symbiotic relation, symbiosis. Mutualism refer to the association with each benefited both the partner. Okay ना? ये ला parasite, parasite माने या जागर जन को डिपेंड करथुवा निजेर आउ किछि आउ जने कंट्रीब्यूट किछि करनथुवा, ये खाइला यार कंट्रीब्यूशन. ये ला म्यूचुअलिज्म. ये बेसिकली दी जन जाको हेल्प कले, ये भी बेसिकली ताको एंथर को प्रोडक्शन पे हेल्प कला, जोटे कि म्यूचुअलिज्म. एंड कमेंसुअलिज्म, बोथ स्पीशीज बेनिफिट. ओके, वन स्पीशी बेनिफिट, अदर स्पीशीज येटा टिके ये अछि बायोटिक रिलेशन देखिबा. तार पैरासाइटिज्म अछि कन वन स्पीशी बेनिफिट अदर स्पीशी हार्मड. ओके, वन स्पीशी बेनिफिट अदर स्पीशी अनएफेक्टेड. एंड कमेंसुअलिज्म रहला अछि बोथ स्पीशीज बेनिफिट. Parasitic is a relationship where organism is benefited the expense of other parasitic. But ये रे mutualism रे खाली commensalism refer to relation where organism is while remain unaffected. এটা টিকে অলগা দেই দিছি যে এইটা mutualism এইটা হবো. লাগুতলা এটা ঠিক আছে. যে এইটা mutualism both species basis, one species benefited, both species partner. ठीक. And fleshy stem covered with thick cuticle store in water is कौन कहा जाए? Hydrilla, Tocoma and Magnolia. Thick fleshy stem covered with thick cuticle water store करे, कौन कहा जाए? Hydrilla, Tacoma, Magnolia. अपुंसिया कहा जाए, अपुंसिया. चलिए ये देखो क्या तुम्हारा जेरोफाइट है. अपुंसिया कहना डेजर्ट प्लांट से एडप्ट करे सर्वाइव करिया पे. एक्सट्रीम कंडीशन रे सी कौन करे लीव मॉडिफाइड करे स्पाइन्स टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेंसी. stem has been modified into flattened green structure performing तो green structure है. Okay. Largest amount of fresh water of our planet is present in lakes and river,
lakes and river, groundwater, pond and wells, and polar ice and glacier. এটা directly NCERT ରୁ class 6 NCERT ରୁ picture ମଧ୍ୟ NCERT ରୁ ଅଛି and that is why ଆମେ class ରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉଟା କି foundation batch ରେ ଆମେ NCERT ରୁ start କରୁ so that people ଯୋଉଟା କି ଏଇ ସବୁ ଡିଲ୍ କରିବେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି NCERT ରେ ଅଛି standard book ରେ ନାହିଁ ଆଉ NCERT ବୁଝିଲେ polar ice and glacier contain almost 68% of fresh water, whereas groundwater contain 30% and surface water in lakes, river and ponds at 0.3%. Recent data from National Aeronautic and Space NASA, जोंडे की recovery will significant decline in Earth's total fresh water. जो देखिवा हीर हला कौन ना देखो ये जानी परिवे picture देजी polar ice and glacier रे largest amount of glacier largest amount fresh water को जो देखिवा ground water only 30% पाखापाखि 60% glacier and ice caps okay कहीं the questions are very important देखुछ तो केमिति केमिति questions आसुची a habitat of long severe winter and few months of summer constituting the only growing season for plants are the characteristics of savanna ecosystem, tundra ecosystem, coniferous ecosystem, taiga ecosystem. A habitat of long severe winter and months of summer constitute the only growing seasons for plants. कौन characteristic ଅଛି long severe winter month of summer भल से बुझ सेही समय रे प्लांट ग्रो हुए सेटा कोन इकोसिस्टम रो पार्ट सावाना पूरा कॉनिफेरस टाइगा कोनटा कहउछ को जल्दी को यस खुशी यू आर राइट वेरी गुड डी पूरा अरे विंटर सीवियर विंटर बुझी पारछ सावाना तो हबो ही नहीं जदि कन्फ्यूजन हबो कन्फ्यूजन हबार तुमरो ये नहीं चांसेस नहीं Tundra ecosystem are tree-less region found in the Arctic and tops of mountains, where the climate is cold and windy, and the sun rainfall is very scanty, both come. Tundra land are covered with snow for most of the time. Summer रे किसी wild flowers हो सही समय किसी plant grow. Polar bear. So tundra biome is a cold tree-less biome in Arctic and Antarctic high mountain tops. Flora हुए moss, lichen, grass, low shrubs. Polar bear, Arctic fox, caribou, Arctic hare, squirrel, and the pyramid that always remain erect. This is also very important. देखो ना ये पार्ट देखी दबो pyramid गुड़ा pyramid of energy, pyramid of biomass is so they remain erect stable ecosystem with homeostasis pyramid of biomass, pyramid of number, pyramid of energy, pyramid of population कहला जल्दी कोएटा
ओके मु देखली पचारुच कौन ना कॉनिफेरस एंड टाइगा यस रिजालिन कॉनिफेरस बेसिकली ग्रीन प्लांट देखा जाए आमर जो देखा तुंद्रा रे आमर ग्रीन प्लांट देखा जाए नॉर्मली मोस ग्रास यही सब देखा जाए एठी कोन लाइक ग्रीन प्लांट देखा जाए जोटा कि मोर और लेस कोन्स टाइप रो प्लांट देखा जाए ग्रीन प्लांट देखा जाए एंड नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पार्ट ये भी कोल्ड रुहे स्नो कवर रुहे एंड समर रुहे बट ता तळकू तुंद्रा कॉनिफेरस रीजन देन टाइगर रीजन ता तळकू बेसिकली 50 टू 70 डिग्री नॉर्थ साउथ रे बेसिकली ये रीजन आसे तुमरो टाइगर रीजन सेटी कोल्ड रुहे बट नॉर्मली सेटी वेजिटेशन वगैरह थाए ओके सो नॉर्मली ग्रीन वेजिटेबल एवं तुमर जो ड्यूरेशन ऑफ समर टिके बढ़ी जाए एज कंपेयर टू तुंद्रा रीजन से अनुसार जो देखिबो सेटा डिफरेंट पाई परिबो हाँ pyramid of energy C is the correct answer C is the correct answer that is right खुशी right yes very good C B कादम्बिनी B केमती हबो नंबर तो चेंज हुए ये इन्वर्टेड भी पारे इरेक्ट माने सबले स्ट्रेट रहिबो करेक्ट ओके तो देखो ये सबले एनर्जी एनर्जी सबले कोन हुए एनर्जी सबले डिक्रीज हे की जीवो राइट धर बहुत सारा गछ खाइला बहुत सारा गछ खाई घास खाई गोटे ये है कौन गोट या गाई गोट खाइला बहुत सारा घास खाइला बहुत सारा घास खाई सी टिके एनर्जी पाइला से बेसटा बड़ एंड फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर था ये प्रोड्यूसर किए ना गछ प्लांट ग्रीन प्लांट को खाइला किए नॉर्मली हार्बिवरस फर्स्ट कंज्यूमर जी को जे कि नॉर्मली जे कि हार्बिवरस जो माने जे कि ग्रीन माने गोट हुंतु सीप हुंतु तुमर काउ हुंतु ये सब कैटेगरी आसीगले देन एमान को खाइला कि कार्निवरस हैला जे सेकंड कंज्यूमर कार्निवरस ये एठी जो हबो के नॉर्मली सेकेंडरी कंज्यूमर तो बेसिकली बेसटा धीरे धीरे कमी जबो है ना नहीं जने कार्निवर गोटे कार्निवरस केतेटा गोट को खाइबो तो सही अनुसार धीरे धीरे बेसटा धीरे धीरे कमी कमी जीवो एक्सेस एनर्जी सबले कमी कमी सो द पीरियड ऑफ एनर्जी इज ओनली टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड always upright because the energy flow from food chain is always unidirectional also with every increasing trophic level some energy is lost in the environment okay so ita mon rakhiyo sabole this is very important one the rule of bacteria in an ecosystem is recycle nutrient immobilize nutrient fix carbon for secondary production supply organic carbon the role of bacteria in an ecosystem bacteria कौन काम this is also very important जल्दी कुह जल्दी बैक्टेरिया काम कौन इकोसिस्टम रे अरे न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करिवारे हेल्प करे क्या डिकम्पोज करे बेसिकली लाइक फंगी decompose like fungi bacteria break down the organic matter in an ecosystem releasing nutrient back to the environment for plant to they help recycle the nutrient break down the dead organism and maintain ecosystem the role crucial for nutrient cycle and sustain life in the biochemical oxygen demand BOD biochemical oxygen water is enhanced by biochemical oxygen demand by increase load of organic matter, increase in nitrogen, increase in heavy metal content, dense population बढ़े DOD DOD जदि बढ़े तार कौन रीजन कौन ऑर्गेनिक मैटर बेसी आसीबो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़िबो जोटा कि आमे यूट्रोफिकेशन कथा कहनुतले सही कांसेप्ट रो लिंक रही अछि when excessive organic matter enter water bodies through sewage stormwater runoff and agriculture discharges, microbial decomposition ramps up. This heighten
microbial activity result in higher BOD level as microorganism consume oxygen while breaking down the organic. Green plant commonly release carbon dioxide daytime and तो basically ऑक्सीजन सॉरी तुम्हारा डिमांड रेस्पिरेशन एटा बहुत एते इजी अछि मु बेसी कहबिनी एटा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे देन करे कार्बन डाइऑक्साइड जानिचो कार्बन डाइऑक्साइड काहेकि दरकार कार्बन डाइऑक्साइड कोन हेल्प करे फोटोसिंथेसिस सेटा मन रखले तुम मन भूल भाल करले तुम पाप लागिवो बुझिल माने तुमे मुंडो आसी कचाड़ी दबो तो कोन मु भूल करिके आसी एग्जाम रे बट दिस वाज द क्वेश्चंस ऑफ ओपीएससी जानिथिबो ये photosynthesis and transpiration. Which of the following constitute 10? Grass, pulses, grass, goat, cow, grass, fish, goat. ये भी बहुत easy one. This one is also very easy one. ମୁଁ ଏବେ କହିଲି जो पिरामिड ऑफ एनर्जी କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗ୍ରାସ ତ ଆଗେ ରହିବ ସବୁଥିରେ ଗ୍ରାସ ଅଛି ତାକୁ ଖାଇବ କିଏ ହାର୍ବିଭରସ୍ କିଏ କିଟା ଆଗ ଗଟ୍ ଅଛି ଗଟ୍ କୁ କିଏ ଖାଇବ ହ୍ୟୁମାନ ଖାଇବ କାଉ ଖାଇବ କିଏ ଖାଇବ काउ तो खाइबन देखो काउ इज आल्सो ए ग्रास खाइबो हार्बिवरस so B will be the correct okay grass what so the following the plant hormone melatonin histamine cytokinin uh चेलोसाइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन देखो मेलाटोनिन जोटे कि ह्यूमन गैस्टिन भी ह्यूमन साइटोकाइनिन भी ह्यूमन ये साइटोकाइनिन बेसिकली प्लांट हार्मोन तो साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन जोटे कि इंसुलिन इज एन एनिमल हार्मोन cardio estrogen animal hormone cytokinin promote cell division and are present in the greater concentrated area and rapid cell division fruit and seed रे तो जो जोटे कि गजा ही जाए नी एटा तुमरो करिया को हेल्प करे fruits of a plant always grow downward while shoots usually grow upward and away from the earth it is known as fruits always grow downward shoots upward and away from the earth it is known as hydrotrophin geotrophin tropism chemotropism all of the above the plant always grew downward foot of the plant अरे बोलून बोलून दादा जल्दी जल्दी बोलून जल्दी जल्दी खत्म करबा 30 टा हिगला yes I sir serotonin कौन हबो geotropin geotropin the response or the movement of the plant parts toward the force of gravity is called gravity ba the downward growth of root toward the pool of the gravity is called positive which of the following source of methanol production methanol कोंडी आसे high IAS coal agriculture residue methanol कथा कहूची natural gas waste सब क्वेश्चंस बे आमे कोल विषय देखिले मु एक्सपेक्ट करछि एटा तुमे समस्त ठीक कर द आंसर दबो ना अरे दबो ना नहीं
देखि देखो कौन शत्रुजित इंडियन बजेट कौन कथा कहूच बजेट रे कौन पढ़िया ପାଇଁ कहूच ना कौन कहूच सॉरी so D is the correct answer yes so C you are right 31 C नुह नो आइसा C केमती हबो देखो सब गुड़ा एग्रीकल्चर रेसिड्यू सब गुड़ार मिथेनॉल बाहर मिथेन बाहर सब गुड़ार मिथेन बाहर एग्रीकल्चर सबुठ अधिका हाईएस्ट है एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री husbandry is the highest production of methane and तापरे एग्रीकल्चर रेसिड्यू है नेचुरल गैसेस वेस्ट कोल रु सबुरु बाहर 1 2 4 methanol can be produced from the variety of carbon containing sources high as coal a gasification of coal species of carbon monoxide and hydrogen and look agriculture residue biomass gasification can also yield synthetic gas methanol natural gas ru steam methane waste say gasification organic waste consider the following difference between parasitism and predation parasitism and predation এটা भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन parasite and so parasite kills prey whereas the predation does not cause death to the okay parasitism is a weak feed on the strong while the predation is a strong feed on the weak so which এটা बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन इजी बहुत ही इजी only two এটা उल्टा कह दीजिए आओ है ना प्रेडेशन प्रेडेटर किए सिंह बाघ हाँ की जाई धरिवे स्ट्रांग दे आर स्ट्रांग आउ पारासाइट है जे कहा पर डिपेंड है सब वीक रहिबो पारासाइट केमती स्ट्रांग है किल स्प्रे है होता है क्या consider the following statement about the characteristics of climate नहीं consider tundra climate it is characterized by at least 1 month with an average temperature of 10 degrees centigrade the subsoil is permanently frozen a condition known as permafrost the dominant vegetation consists of tall coniferous trees like pine or fir तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट एबे हमें देखिए आसलु राइट नाउ डू इट फर्स्ट how many of the statement 1 month with average temperature above 10 degree subsoil is permanent frozen condition known as permafrost the dominant vegetation consists tall coniferous अरे भाई एबे ही पढ़ेली coniferous हबो की is wrong is just true only two statement okay so the tundra climate defined by having at least 1 month with average temperature above the 0 degree but no month with average temperature exceeding 10 this allows a brief summer जोटा कि बट टू कोल्ड सपोर्ट द फॉरेस्ट से किसी फॉरेस्ट न थाए जोटा कि would likely be classified as a sub-arctic climate other type. The defined feature of tundra climate is permafrost. Yes, जोटा कि सबुले फ्रोजन है थाए soil टा. Tundra is a treeless biome. आमे देखिले एबे ट्री तो केमती आसीबो. With reference to ये biome टा टिके देखि दबा biome grassland तुम्हारा mountain peaks ये सब ए पार्ट उटा क्वेश्चन राइट देखि दबो. Reference to phenomena of coral bleaching, consider the following statement. It occurs when coral polyps expel the symbiotic algae. जो जानथली जानछ से बंची कि रुए तुमरो कहा पर कोरल रीफ ऊपर से जो जानथली रुए सेति पई ता कलर भी living in their tissue. Elevated sea surface temperature are primary pressure leading to the widespread coral bleaching events. Coral bleaching always result in immediate death the coral colony. Which of the following say coral bleaching हेले white हो जाए जानी चो या कितना स्टेटमेंट ठीक अच्छी आ भितरु तो जनथल coral it occurs केतळे हुए ब्लीचिंग कथा कहौ
coral bleaching केतळे हुए प्रीवियस क्वेश्चन कौन कहूच प्रीवियस क्वेश्चन थिला 1 करेक्ट हबो ना प्रीवियस क्वेश्चन रुके टिके देखि दउची ओनली 2 ना कीटा करेक्ट हबो 1 and 2 1 correct and 2 correct okay 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 1 month of an average temperature yes right one of the average temperature above 0 degree but above 0 degree no month with average temperature exceeding 10 degree तो टिके एठी ये अछि हाँ यस तुंद्रा रीजन जदि बेसिकली एभव हबनी बेसिकली एभव 0 to 10 डिग्री भीतर रहइबो कहूची देखो कथा लकी एवरेज टेम्परेचर जदि एभव 10 डिग्री रहिबो 1 मंथ एटा टाइगर को कन्वर्ट हेजो एटी टिके एटा को देखि दिबा एटा डाउट रखिथिबो 1 हेई पारे ओनली 1 हेई पारे राइट राइट लिजना लिजालिन ओके 34 এই क्वेश्चन गुड़ा बड़ क्वेश्चन यस ओनली टू स्टेटमेंट कोनटा कोनटा coral breach occurs when coral polyp expel the symbiotic algae in their tissues ताकू हटे न देले से निजे बंची पारेनी बेसिकली coral bleaching always result in immediate death of a coral immediate नो तो जो देखिबा coral bleaching is significant trait of coral reef worldwide coral polyps have symbiotic relation with zooxanthellae कि microorganism थाई algae टा live within their tissues. These algae provide a coral with up to 90% of its energy through the photosynthesis. ये जो zooxanthellae ये photosynthesis ये algae photosynthesis ये depend करे coral polyps depend करे zooxanthellae ऊपरे रुए ये photosynthesis through रे energy नहीं कि दिए coral polyps को एवं color मध्य दिए when coral becomes stressed they expel their zooxanthellae causing the coral turn white or pale or hence coral bleaching sea surface temperature हुए immediate death of the coral colony so immediate death नुह एई दीटा correct the following statement regarding wildlife protection 1972 सेटा यूपीएससी रा क्वेश्चंस थिला wildlife protection 1972 provides for the creation of national parks wildlife sanctuary for the protection of wildlife under the wildlife protection 1972 hunting of any wild animal specified in 1 2 3 4 is absolutely prohibited under the under all circumstances which of the following statements given above are correct अरे टिके करेक्ट स्टेटमेंट को यस खुशी सेटा ठीक अछि तुम एटा कहछ ओनली 1 हबो ओनली 1 हबो टाइपिंग एभव देछि कि बिलो देछि सेटा टाइपिंग रो किछि हेइ थाइ पारे विल सी wildlife protection provide for the creation of national parks and wildlife sanctuary yes that is right under wildlife protection act hunting of any wild animal जोंटा कि absolutely prohibited नुह schedule 1 रे strict अछि but सबु schedule 1 2 3 4 सबु थरे all circumstances रे अछि इटा wrong statement is wrong one is right okay provide strong protection to animal listed in schedule 1 2 3 4 generally prohibited their hunting but it is not an absolute prohibition under all circumstances the act does contain provision allowing hunting such as self-defense when an animal becomes dangerous to human life for scientific research or management purposes but only with specific which of the following is the most appropriate description of in conservation of
biodiversity in situ. I hope you know. In situ. Jaldi, jaldi, jaldi. In situ. Very easy one. Conservation of genetic research, gene bank, ये सब seed bank. So outside their habitat, okay, maybe no. Protection of endangered species, breeding them in captivity in zoo, that भी no. Or what in the conservation of ecosystem, the conservation of ecosystem and natural habitat, and maintenance and recovery of viable population of species in their natural surrounding. Yes, don't it be ସେଇଠି ସେଇଟା ହେଲା in situ. This is correct. Okay, one is C, the correct answer to conservation. Right, right. So in situ conservation, ex situ माने जोंटे के outside. एक प्रथम थिला. In bank वगैरह outside their natural. Consider the following statement regarding savanna biome. Savanna biome is often described as a parkland landscape consists of grasses, scattered trees. Grasses with the existence of pronounced dry season, in existence of pronounced dry season and frequent fire prevent the growth of the dense forest canopy in the savanna biome. Which of the following statements given above are देखो सावाना बायम पार्कलैंड यस लैंडस्केप था grasses था and scattered trees था so this is true the existence of pronounced dry season frequent fire prevent the growth of dense forest canopy in the savanna biome yes correct statement 1 and 2 37 37C all of you very good you are gem very good savanna the tropical wet and dry climate usually characterized by continuous cover of all grasses with isolated and drought resistant tree. This gives an park like appearance distinct from both dense forest and tree. This description accurately captures the essence of savanna landscape. The wild savanna Africa wild कौन जानी चाहिए नहीं Llanos South America and part of so do see कौन location रही savanna and Llanos wild South Africa sorry Africa wild consider the following statement regarding carbon capture storage technology CS technology. It involves complete removal of carbon dioxide from the atmosphere. It is beneficial for emissions that are hard to wipe out. Carbon capture देखो किसी किसी स्टेटमेंट एमती दौची किसी किसी स्टेटमेंट एमती दौची स्लाइटली माइंड लगेबो तार आंसर बाहर कर दो देखो कंप्लीट रिमूवल ये रे भाई रिमूवल केबे भी करि परिबो ना एमती कोन हेई परिबो आ कंप्लीट रिमूवल काहे की दरकार बिना कार्बन डाइऑक्साइड आमे सर्वाइव करि परिबोनी राइट और रॉन्ग so CCS is beneficial for emission that are hard to wipe out सेही गुडा को wipe out जोटा एटमॉस्फेयर न होथुबो सेही गुडा को आमे सेही ता पय एटा बेनिफिशियल so correct answer is B. The new research suggests that lower level of carbon dioxide in a planet if compared to the neighbor could indicate presence of water the planet. Carbon capture and storage is a way to catch carbon and trap it beneath the earth. यानी कि earth तले रखी दवा. It is different to carbon dioxide removal CDR route where carbon is sucked out of the atmosphere CDR ray. Although some of the technology overlap, the difference is that CDR brings down the level of carbon dioxide in the atmosphere cooling the planet while CCS fossil fuel plant and factory prevent gas from the getting out in the first place. बाहर को जीवा दबने ट्रैप करियो धरिबो आर तळे पुरिलो. Consider the following statement. Oxides of sulfur, oxides of nitrogen, or carbon monoxide and carbon dioxide. Don't ki how many of the above are some important pollutants released by steel industry? Steel industry. Majority क्वेश्चन यही सब रे ट्राई करिवो प्रत्युष जय हिंद
Yes, right, right. Earth will be. କେମିତି ଅଛ ସମସ୍ତେ? ସବୁ ଗୁଡା ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଏ ସବୁ ବାହାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ କ'ଣ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଅକ୍ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ସଲଫର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, PM 2.5, ୱେଷ୍ଟ hazardous. Reference to 40 number. We have only 10 minutes to go. 10 minutes I will complete it up. Right? The in reference to Jim Corbett National Park, it is the India's and Asia's first national park. The first to come under the Project Tiger initiative, completely encompass the Sivalix near the foothills. केतेटा स्टेटमेंट या भितर ठीक टा अछि? How many? Sorry. Yes. B. Dita. कोनटा भूल अछि कहलो? कोनटा भूल अछि को? Completely. এই सब जो कीवर्ड है ना, completely, only, full up, entire, चलो नहीं, ये सब को तुम्हें कीवर्ड को फॉलो करिवो. So then Jim Corbett, yes, ale foothills अछि near tourist. With its hill, grassland and stream, Corbett is ideal tiger territory. जोटे कि yes, Project Tiger said 1973 with tiger population at 160. It boasts the largest tiger reserve, one of the highest tiger density in the country. Which statement accurately describe cyanobacteria? Very very important. History जेतले पढ़ाए प्रथम क्लास रे साइनोबैक्टेरिया कथा कहा जाए या ब्लू ग्रीन algae जेति कि फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ मु. So this is about cyanobacteria. They are all PSC POIQs. Every day 9 PM. समस्त रेडी आसीबो. टुमारो इकोनॉमिक्स रिवाइज करिक आसीबो. इकोनॉमिक्स रिवीजन कर दबो. काली इवनिंग रे आमे डिस्कशन करिवा इकोनॉमिक्स. तो साइनोबैक्टेरिया इज अ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. जदि फोटोसिंथेसिस न करि पारथो ना ताले पॉसिबल न थांता से रहि पारथंदा. ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑक्सीजनिक बेसिकली फोटोसिंथेसिस अरे सेति पई इनिशियली तो कार्बन डाइऑक्साइड नथिला, तो ऑक्सीजन थ्रू रे से फोटोसिंथेसिस करूथला. सेति पई ये साइनोबैक्टेरिया वेरी इंपोर्टेंट. Cyanobacteria not a fungus. They are distinct group of prokaryotic organisms belongs to the domain of Cyanobacteria primarily autotrophs. They ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, meaning they can produce their own food. Photosynthesis. They have ability to capture light, energy and convert it into chemical. And that is the capacity. କାରଣ initially carbon dioxide ନଥିଲା. ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ତୁମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିଲା. ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଇକି ଯାଉଥିଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ and ସେଇଠୁ basically photosynthesis. Consider the following statement. Agriculture soil release nitrogen oxide into the environment. Cattle release ammonia into the environment. Poultry industry releases reactive nitrogen compounds into the vitro. Which following statement are correct? ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖୁଥିବ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ର କ'ଣ ଆନ୍ସର ହଉଛି. ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ର କ'ଣ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖୁଥିବ. कैटल रे नियंत्रण करे नाइट्रोजन ये पोल्ट्री इंडस्ट्री नाइट्रोजन कंपाउंड दिए. फर्टिलाइजर microbial activity, soil release nitro N2O and other nitrogen oxide. Cattle excreta जो आसे सेइथरे डिकम्पोज हो जाए मैन्युअर फेनर एमोनिया बाहर स्मेल करेनी इथेन भी थाए. पोल्ट्री लिटर जोटे कि ड्रॉपिंग एंड बेडिंग रे इज एमोनिया एंड आल्सो
with reference to nitrogen cycle, the biological oxidation of ammonia to nitrate takes place in the following: distillation, denitrification, ammonification, nitrification. Jaldi. With reference to the nitrogen cycle, the biological oxidation of ammonia nitrate, ammonia to nitrate hela. Ammonia, ammonia कौन? NH3, ammonia to nitrate. Nitrate माने कौन? Nitrate रो formula कौन? Nitrate रो formula कौन कहलो? NH3 to NO3. काढ़ी नहीं जीवो. Option. And nitrification. D. Nitrogen cycle contains four stages: nitrification, assimilation, ammonia. Nitrification जोटा कि biological oxidation और ammonia to nitrate हुए, followed by oxidation of nitrate to nitrate. Nitrification is an aerobic process performed by a small group of autotrophs bacteria. And in the context of Earth hour, consider the following statement: it is a nitrative, sorry, the initiative of worldwide fund for nature WWF is observed every year in the last week of March to raise the awareness about Earth hour. Ye kore Earth hour. Earth hour, yes, worldwide fund for nature every year last week of March to raise the awareness. One and two statement. फर्स्ट लॉन्च 2007 रे हितला WWF पार्टनर ऑस्ट्रेलिया रहितला एंड सिंस तापरठू एवरी ईयर लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च एवरी ईयर रे हमें करा जाए सेही समय गोटे आवर्स बेसिकली इवनिंग रे 8 ରୁ 9 कहा जाए कि बंद रखिए लाइट बंद which of the following convention primary objective convention Stockholm Basel convention and Minamata convention and Rotterdam convention एक सु convention गुड़ा मन रखियो एटा very very important Stockholm Basel Minamata Rotterdam last 5 questions guys do it fast Stockholm EOP Stockholm EOP persistent basically EOP persistent organic pollutant कि बेसेल तो स्टॉकहोल्म टा कोंटी कहलो देन बी बेसेल टाला hazardous movement of across the boundary international border रे सेटाला बेसेल कन्वेंशन मिनामाता कन्वेंशन मर्क्यूरी मिनामाता कन्वेंशन मर्क्यूरी एमती मन रखिबो हेल्थ ऊपर एनवायरनमेंट डिपेंड करे रोटेंडम कन्वेंशन PIC prior informed consent procedure for hazardous chemicals. So D the answer. So try to remember these things. And Stockholm टा कोंटी बेसेल टा कोंटी मिनामाता टा कोंटी रोटेंडम कोंटी जानि छ समस्ते जल्दी जल्दी जवाब दियो को जगह रे अछि ये शत्रुजी स्टॉकहोल्म टा स्वीडन रे मिनामाता कन्वेंशन कोडी के कहि परिबो मिनामाता कन्वेंशन जापान बेसेल बेसेल टा कोंटी बेसेल टा कोंटी बेसेल्टा एंड रोटेडम तुम्हें आइडेंटिफाई कर एवं ताकू मन रखियो ट्राई करो कोंडी मैच करिकी ओके persistent organic pollutant basel convention transboundary movement hazard minamata convention and rotterdam टा कोंडी very very easy one जल्दी को मु कहबिनी सब basel convention rotterdam convention and stockholm are related to which of the following human rights management of pollution conservation of wetland conservation of rivers basically management of pollution the correct answer basel switzerland very good shatrujit तो basel convention ये सब hence the lithium triangle is located in which region of the world this is very very important question recently भी किछि दिन पूर्व न्यूज रे थिला
रिसेंटली किछि दिन पूर्व लिथियम ट्रायंगल एंड लिथियम प्रोड्यूस सेठी बहुत हुए लिथियम ट्रायंगल साउथ अमेरिका दैट्स राइट very good very good South America, lithium triangle is region of South America spanning part of Chile, Argentina, Bolivia, which holds the more than half of the world's lithium reserve. ये एरिया देखो मते बर्तन क्वेश्चन है लार्जेस्ट lithium producing country in the world. Which country the largest lithium producing country in the world? ये क्वेश्चंस भी आसी पारे. Let me know. Largest lithium producing largest lithium produce तो तुमे जोटे कि लिथियम ट्रायंगल को एमती मन रखि पारिबो कंट्री को केब के बी के केब रे मन रखि पारिबो मु एमती मन रखिथिली सो बेस केब सी फॉर चिली ए फॉर अर्जेंटीना केब करूचो लिथियम नहीं कि केब रे बसचो ओके अर्जेंटीना एंड बी फॉर बोलिविया ओके do it remember like this केब लिथियम आनीच आनिकी केब रे बसचो केब रे बसी कि नहीं जाउचो okay recently Julian Alps transboundary biosphere this is also was added to UNESCO biosphere reserve list. It is located in which of the following country? Belgium, Kingdom of so current affairs रो क्वेश्चंस करेबी बट current affairs को प्रिपेयर करो current affairs related इकोनॉमिक्स रो एनवायरनमेंट रो ये पक्का क्वेश्चंस स्पेन एंड पोर्तुगाल फिलिपाइंस एंड इटाली एंड स्लोवेनिया अरे समस्ते गोटे लाइक कर ना नहीं गोटे लाइक कर कष्ट कर एनर्जी दौची लाइक कर पैसा पड़ोनी लास्ट दुईटा क्वेश्चंस इटाली एंड स्लोवेनिया मुझे जानी तुम भूली जाइथुआ तो लाइक फाइक किए कर पाठपढ़ार व्यस्त बट टिके टू मार दियो जुलियन आल्प्स इटाली एंड स्लोवेनिया आल्प्स जानी तुम्हें जदि डिमार्क टिके लगेब ना के डिमार्क लगेब ऑप्शंस अच्छी बट ये आल्प्स रो मेन रीजन ये बाउंड्री ये रखिबो स्विस आल्प्स फ्रेंच आल्प्स और जुलियन आल्प्स बेसिकली यही ट्रांस बाउंड्री which of the following statement in respect of landslide are correct landslide देखो एबे ये लैंडस्लाइड ऊपर आसी क्लाउड बस्ट कोन क्लाउड बस्ट आईएमडी रो डेफिनेशन कोन ये क्वेश्चन आसी पारे इलेक्शन कमिशन देखि देथिबो करंट अफेयर्स ऊपर एसआईआर ऊपर देखि देथिबो इलेक्शन कमिशन रूल कोन तार आर्टिकल कोन सब मन रखि देथिबो इलेक्शन कमिशन फंक्शन कोन इलेक्शन कमिशन कमिटी किए बेसिकली रुहंती पार्टिसिपेट करंती प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग किए के चीफ इलेक्शन कमिशन वगैरह ये सब भी ध्यान देथिबो एंड एजुअली जोटे कि क्लाउड बस्ट कोन क्लाउड बस्ट आईएमडी रो डेफिनेशन कोन कोन टाइप रो क्लाइमेट रे हुए एवं को प्रकार रेनफॉल हुए से समय को टाइप रो क्लाउड देखा जाए से समय ओरोग्राफिक माने रेनफॉल की कौन क्लाउड को प्रकार क्लाउड क्यूमुलोनिम्बस और कौन माने ये सब टिके देखिदबो these are the only so these are occurs only in gentle slope so landslide gentle slope हुए generally occurs in a clay rich soil earthquake trigger slide so या ऊपर कोनटा आंसर होई छै following statement respect to landslide right देखो ओनली ये जो ओनली फनली दे देला जेते पढिबो सबले अंडरलाइन करिवो ओनली नॉट इनकरेक्ट करेक्ट ऑल एंटायर कंप्लीट these are key word write it down in your mind before going to the exam कि ए वर्ड देखिन आगे धरिबी बुझिल नहीं एटा को काटो एटा को कटि गले देखो वन कटि गला देखो इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग एल्स ओनली भाबी कि काटि दबो तो आंसर ठीक करी आसी
तो सब क्वेश्चंस को पढ़ी के आसबे एग्जाम रे, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन यू शुड लेफ्ट विदाउट रीडिंग टू टाइम्स, मिनिमम टू टाइम्स पढ़िबो सब क्वेश्चन, मिनिमम, मैक्सिमम जते थर पढ़ी पारे बट मिनिमम टू टाइम्स पढ़ी कि छाड़िबो। जदि भी न आसछि जो बिल्कुल भी जानिनो जीरो नॉलेज अछि, स्टिल देन क्वेश्चंस एंड एजुअली ऑप्शन, डोंट फॉरगेट टू रीड द ऑप्शंस आल्सो, एंड ऑप्शन रू भी आंसर केते केते भारी जा गुटिए क्वेश्चंस फॉर लाइफ रे एपट सेपट कर। ओके, more common थाए normally steep slope रे, gentle slope, heavy rainfall can trigger them, but the statement is wrong because of like there is soil थाए absorb water करे, swell करे, फुली जाए, then छाड़ी दिए, lose ताकर strength कमी जाए, this which makes them prone to landslide, earthquake cause shaking and slope failure which can trigger landslide and especially mountainous। सुनो आ गुटे कथा, नॉर्दर्न इंडिया रे बहुत सारा रिवर्स अछि, चाहे गंगा तार ट्रिब्यूटरी हो, पंजाब रे रिवर अच्छी, उत्तराखंड रे रिवर अच्छी, से गुड़ा सब देखिदब, छोटिया छोटिया रिवर देखियो कहीं क्वेश्चन ए कम, बहुत वर्षा रे बहुत हंगामा हो जाइए एथर, तो जदि से एरिया रो क्वेश्चन पचारि फेर, सो नॉर्दर्न इंडिया रे रिवर तार ट्रिब्यूटरी तार डिस्ट्रीब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी बहुत मिलिबन सेठी, बेसिकली ट्रिब्यूटरी मिलिबो तुमको, से सब देखिदब। Okay, last question. Which of the following statement correctly differentiate the Great Barrier Reef, Coral Triangle? Great Barrier Reef and Coral Triangle. Kali semti asibe ame not alku. Great Barrier Reef covers approximately 10% world's coral reef ecosystem, while the Coral Triangle hosts 75% of the world's coral space. The Great Barrier Reef of UNESCO World Heritage Site, where Coral Triangle is not. This is a very very important questions. Great Barrier Reef, Coral Triangle, दीटा को concept तुम देखी परिवे टू, दीटा को concept. First, Great Barrier Reef covers approximately 10% world coral reef. Yes, that's right. While Triangle 75% world coral species. Yes, right. Great Barrier UNESCO World Heritage काइने एटा को protection दरकार, सेति पई अछि, but एटा नुह. So both statement are correct. So both statement are correct. So the Great Barrier Reef accounts. So Great Reef देखो कोरल ट्रायंगल कोठी, पूरा ये एरिया को नहीं, पूरा इंडोनेशिया जापान वगैरह नहीं की, पैसिफिक ओशन, खास करके वेस्टर्न सॉरी वेस्टर्न स्पेसिफिक ओशन रे तुम्हें पाइबो। तो 10% while the coral triangle hosts 75% world coral space, कोरल ट्रायंगल बहुत बड़ो, ग्रेट बैरियर रीफ केवल एतिक परसेंट, एंड एटार डिक्लाइन होची, यार डेन्यूडेशन होची, तो एटाको प्रोटेक्ट करे दरकार, सेति पई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो टिके जे माइंड रो थिबो कि एते बड़ एरिया को बेसिकली यूनेस्को साइट डिक्लेयर करे डिफिकल्ट, बट कोरार जदि ग्रेट बैरियर रीफ रो डिफिकल्ट, तुमे बहुत सारा न्यूज रे सुनिथिबो, बहुत सारा क्लाइमेट चेंज जोगु बहुत सारा तार डिक्लाइन होची, तार सेति पई ताको प्रोटेक्शन दरकार, so that is why ये रहिबो तुमर आंसर। ओके गाइस, so A नुहे, C is the correct answer, जे A मारी थिलो। If anything else let me know। ये टेस्ट सीरीज इन पर्सन जाई दौन, मु कहबी नेक्स्ट संडे पाखरु आम स्टूडेंट हुंतु या जो स्टूडेंट भी जो माने एठी ओएस हब रे पढु नांती भी, समस्त जोंठी भी दउचंती टेस्ट सीरीज जरूर दियो। एग्जाम जदि ऑफलाइन हबो, ऑफलाइन प्रैक्टिस रखिबा बहुत जरूरी, घरे बसी कि से कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हबनी, मो टाइम एंड अगेन कहूची, गो एंड गिव द टेस्ट। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय जगन्नाथ, नमस्कार, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। जय जगन्नाथ।